Hello students, welcome to your NSM class. Now we are doing probability by using Bayes theorem apply kori right? So last class re I have given a problem. Mo se question ta lekhuni bahut bada question ta se question ro mo data dei doji. Okay, so question re kon deichi amro in that question in a hospital survey there are 10% patients are alcoholic. 10% are alcoholics. Okay, that means probability of E1 nova. Okay, that is equal to 10 by 100, 1 by 10. Then out of these 10%, we have 70% are cancer patient or cancer strikes. Okay, that is equal to probability of A subject to E1. Okay, that means cancer subject to alcoholics is equal to 70 by 100, 7 by 10. Similarly, 20% are smokers. Probability of E2 20 by 100, 2 by 10,000, 500 करनी 1 by 5 कले तमरा problem हबो. Okay, so 2 by 10 in thou, and out of these 20% we have 80% are cancer strikes. Probability of A subject to E2 is equal to 80 divided by 100, 8 by 10. Then 30% gutka chewing, 30 by 100. Out of 30%, 50% are cancer. Okay, then it will be 3 by 10. This is 50 by 100, 5 by 10. Cut करनी एमती का थाउ, एमती थिले हमरा माने नंबर टा हमको इजी हबो. ओके, क्लियर. तो एथि हमें कौन करिबा, then finally जोटा रहला जे only 40% are not any specific habits. That is equal to 40 by 100, 4 by 10. And out of these 40%, 10% are cancer. So 10 by 100. Sorry, एठी लिखी भूली गली मु एठी. Probability of A subject to E3. एटा probability of E4. एटा probability of E3. एटा probability of A subject to E4. That is equal to 10 by 100, 1 by 10. Now by using the formula, what we will have, हमें ये फॉर्मूला टा अप्लाई कर देले हमें एथि पाइबा कोन पाइबा मोटा लिबे देली रे मन रखता 1 by 7 2 by 10 8 by 10 ये सब नंबर जे को मन रखता. Then what we will have, हमर एथि हबो कोन हबो
the probability of a patient, cancer patient from E1, that is equal to probability of E1 into probability of A subject to E1 divided by probability of E1 into probability of A subject to E1 plus probability of E2 into probability of A subject to E2 then plus probability of E3 into probability of A subject to E3 plus probability of E4 into probability of A subject to E4. Okay, so see हमको question रे पचारछि find a patient who is taken as a cancer patient who is a हमरो alcoholic patient बोली कहिछि. Okay, जदि alcoholic पचारथिबो alcoholic smoker पचारथिबो smoker जोटा पचारथिबो से अनुसार हमें बाहर करिया. मो एटा alcoholic होला. सो बर्तन एटा कोन हबो हमर आस्तिला कोन 1/10 सेकंड टा आस्तिला हमर 7/10 डिवाइडेड बाय 1/10 7/10 प्लस 2/10 8/10 प्लस 3/10 5/10 प्लस 4/10 into 1/10 एथि पे 10 रखली जे हमको एडिशन कला बेले इजी हे जिवो. ओके, सो इट विल बी 7/100 सबु जाकर एलसीएम 100 आसीबो. एटे 7 8 दुने 16 15 4 के 4. ओके, 100 को 100 कैंसिल हेगला. सो इट बिकम्स हमरो इठी सो एटा केते हेगला रे हमरो 16 15 31 7 4 11 42 7/42 1/6. ओके, सो हमरो इठी राइट जो डाटा दिया से अनुसार हमरो इठा ठीक अछि. राइट, सपोज हमें एठी कोन करिबा इंस्टेड ऑफ अल्कोहलिक स्मोकर बाहर करिबा. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सब्जेक्ट टू A. सो स्मोकर अबाउट 2/10 into 8/10 डिवाइडेड बाय एठी केता आसी हमरो इटा 7/100 16/100 15/100 4/100 हैला. तो इठी 100 सॉरी अथल काटिया. सो 16/100 एटा तो हमर 42/100. सो इट बिकम्स 16/42 8/21. ओके, I think some of the students जे करिसंती they can recheck. हमरो I think टिके मिस्टेक अछि हमरो जो सॉल्यूशन रे. ओके, क्लियर. ओके, लिबेंदली एटा मु हमें आउ गोटे प्रॉब्लम करिबा बाय यूजिंग हमर बेयस थ्योरम. राइट, बेयस थ्योरम यूज करिकरी आउ गोटे प्रॉब्लम करिबा.
A manufacturing company produces units of a product in units of product in 4 plants. 4 plants. Okay. एटी डाटा दे दीजिए. Define events. Define events A1, A2, A3 and A4. Okay. A unit produced in a plant and B is the A is the unit is A unit produced in plant and B is the event. B is the event. Okay. B is the event. Okay. B is the हमरो एची event. Next कौन करिवा? हमको से डाटा दे दीजिए. From the past records of the proportions the following conditional probabilities are set. The following conditional probability are set. बड़ा सहज दे दी से probability of B subject to A1 0.05, probability of B subject to A2 0.10, probability of B subject A3 0.15, probability of B subject to A4 0.02. Okay, so the first plant produces 30%. The second plant 25%. Third plant 40% and the remaining 5% by fourth plant. हैला हमरो जो सब जाक प्लांट रो से केते कोन तयारी होची देई देउची. ओके, सो what is the probability? Eta question, what is the probability that the unit was produced in plant 3? The unit by product produced in plant 3. Okay, so एठी almost सब जाक डाटा हमको दे देइछि.
से डाटा भितर हमको एटा देखियार अछि ओके राइट क्लियर वर्तमान देखो हमरो एबे हमें कोन करबा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटी बी सब्जेक्ट टू A1 बी सब्जेक्ट टू A2 ए डाटा जाको हमको दरकार ऑलरेडी दे देछि बट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट according to question probability of A1 that is first plant produced how much 30% to 30 by 100 that is equal to 0.3 decimal रे अछि एटा भी decimal कर देली then probability of A2 25% that is equal to 0.25 probability of A3 is equal to 40% 0.4 probability of A4 0.05 ओके ए जाको दे देछि ऑलरेडी सो हमको कोटार पचारछि थर्ड दार पचारछि हैला कोदरे पचारछि थर्ड रो ओके ओके सो एठी प्लांट 3 कहिछि सो द फार्मूला हमर एठी डाटा रहिला रे मु लिभेई दोछि डाटा टाइम रो एठी रहिला ओके now the product is coming out from A3 subject to B is equal to probability of A3 into probability of B subject to A3 by A तीनटा जाकर sum probability of A1 probability of B subject to A1 plus probability of A2 into probability of B subject to A2 plus probability of A3 into B subject to A3 plus probability of A4 into probability of B subject to A4 okay so एठी वैल्यू जाको पकेबा A3 केते हमरो 0.4 into B subject to A3 केते लिखा हितला 0.15 by probability of A1 that is 0.3 into 0.05 plus 0.25 into 0.10 plus 0.4 into 0.15 plus 0.05 into a formula टा निश्चित भाबे दबा 0.05 into 0.02 so probability of A3 subject to B is equal to 15 हमरो 60 0.1560 तीनटा डेसिमल 060 by 5 3 15 0.015 plus 25 50 125 0.0 25 दशा 250 0.025 okay then 0.060 एटा मल्टीप्लाई कर दोछि 15 60 then 0.001 डेसिमल हबो ना तम मान कर भलो भाबे बुझी पाइलो डेसिमल रे केमती लिखा जाए ओके सो इट बिकम्स 0.060 by एजा को ऐड कर देले it becomes 0.001
कितने आसूची कैलकुलेटर कितने दरकार हमको 0.015 प्लस 0.025 प्लस 0.060 प्लस 0.001 is equal to 0.101. So 0.060 divided by 0.101, 0.594. Okay. This is the final answer. So say product probability A3 subject to B is equal to 0.594. Answer इटा. Okay, clear? तुमको बुझा पड़िला ए भलिया हमरो बेयस थ्योरम अगेन गोटे प्रॉब्लम दउची भलो भाबे केयरफुली ताकू देखो देन यू कैन डू इट तो माने तापरे करियो. ओके बिना न देखि की आमे करिवानी देखि की ही करिवा राइट. ओके क्वेश्चन दउची देखो. A factory has two machines. A factory has two machines. Past record shows that machine 1 produces 30% of the item of output and machine 2 produces 70% of the items. Further 5% of the item produced by machine 1 were defective and 1% of the produced by machine 2 were defective. Okay. If a defective item is drawn at random, what is the probability that the defective item produced by machine
2. Okay, so this is the question. One thing you should remember while you are doing this type of Bayes theorem problem रे आमे निश्चित भावे by using Bayes theorem लिखिबा प्रोसीजर रे डाटा जाको ठीक ठाक लिखिबा देन तापरे फार्मूला टा भी दबा बिना फार्मूला रे सीधा सीधा पकई दबानी तापरे आमे सिलेक्ट करबा कोटा हमरो E1 हबो कोटा E2 हबो ए काकू नबा एटा निश्चित भावे लिखिबा E1 E2 and A हिला एठी for this question the defective item will be your A. Defective events of the defective item will be your A. बाकी जो रहिला तमरो A1 E2 ए सब निजे निजे लेखिबो लेखिकी ताकू फर्दर तमे ट्राई करिवो करिवा पे ओके सो एज वी हमें जोमती बाकी प्रॉब्लम जाको करथिले ए जाको हमें सेमती करिवा करिकरी हमें निश्चित भाबे आंसर सेंड करबा से इट मे बी हमको हुए तो 5 मिनिट्स लागिवो 5 मिनिट्स रे हे दिवो तो दैट इज नॉट टाइम इज नॉट माने इंपोर्टेंट तो माने आराम रे करिकरी सेंड करो बाकी जदी किछि नुवा अधिका प्रॉब्लम्स हमें किछि जो वी आर हमें जो करिचे ताकू हमें नेक्स्ट क्लास रे कंटिन्यू करबा इफ नेसेसरी हमें किछि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रो प्रॉब्लम भी करबा ओके क्लियर सो ए जाको भलो भाबे देखिबा आंसर करिकरी हमें सेंड करबा सो दिस इज फॉर टुडे नेक्स्ट क्लास रे बाकी हमें अलगा जिंसो हमें डिस्कशन करबा ओके सो बेयस थ्योरम टा को निश्चित भलो भाबे प्रैक्टिस कर देथिबा सो दैट थ्योरम टा एज इट इज जदी आसीबो हमें जेमती लिखि परिबा ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे